हेलो एवरीवन। पिछले सेशन में हमने द यूएस इंटरवेंशन इन वेनेजुएला पे बहुत डिटेल में बात की, पूरा उसका बैकग्राउंड समझा, यूएस ने जो एक्शन लिया उसके पीछे क्या कारण है, क्यों उसने ऐसा स्टेप उठाया, इन सारी चीज़ों को हमने बहुत डिटेल में समझा. So let's do a deep geopolitical analysis of whole case from the angle of what we have learned in our last 2 classes on geopolitics. I mean a case study in the shifting rules of global power. The geopolitics of intervention. In this operation, US Special Operation Force, Delta Force, captured President Nicolas Maduro and Celia Flores in Caracas following large-scale strikes. So this was a shift, a move from sanctioned diplomacy to kinetic regime change. अब अगर हम यहाँ पर geopolitical thesis को देखें तो ये है the US has signaled a return to the Monroe Doctrine, asserting that its backyard, that is Latin America, is subject to US domestic law over international norms. और यहीं पर हम अपने जियोपॉलिटिक्स का एक रूल अप्लाई कर देते हैं, द प्राइमेसी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. वो थ्योरी क्या कहती है? रियलिज्म. स्टेट्स एक्ट टू मैक्सिमाइज पावर एंड सिक्योरिटी रिगार्डलेस ऑफ लीगल रेटोरिक. इसको अगर हम अप्लाई करें देन यू कैन क्लियरली फील द अनस्पोकन रूल. The 2026 Venezuela intervention is a stark reminder that in the arena of nations, international norms are often conditional. When a great power perceives its core security and economic interest to be at stake, all other rules become negotiable. This is the enduring, uncomfortable, and foundational truth of geopolitics. The primacy of national interest. While the US is saying that it is because of the narco-terrorism, right? They are enforcing law. The underlying main drivers are energy security. That is, US is securing the world's largest oil reserves. दूसरा जियोपॉलिटिकल रूल जो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं वो है इकोनॉमिक्स, स्टेटक्राफ्ट एंड द रिसोर्स कर्स. वेनेजुएला एक ऑयल हब है, बट मदुरो के समय में वेनेजुएला's oil production has dropped by 1.5 million barrels per day. तो ट्रंप ने क्या स्ट्रैटेजी चली? उन्होंने वेनेजुएला का डायरेक्ट कंट्रोल लेने की कोशिश की है, बट ही हैज स्टेटेड इट वुड रन वेनेजुएला टू रिहैबिलिटेट इंफ्रास्ट्रक्चर. मगर अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो इसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना वो पेट्रोपॉलिटिक्स है. द यूएस इज लीवरेजिंग द रिसोर्स कर्स, मतलब where a nation's wealth leads to its vulnerability to justify intervention as economic stabilization. तीसरा रूल अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें तो वो होगा the erosion of sovereignty. Westphalian sovereignty versus responsible sovereignty. पुराना रूल कहता था all states are equal. No state can interfere in another's internal affairs. मगर आज के समय की जो रियलिटी है वो है sovereignty is conditional. The US argument is that Venezuela became a criminal enterprise, thus forfeiting its sovereign protections. But actually, if you see, this all is going to set wrong legal precedents in future. This action of US has clearly indicated that the post-Cold War era is over. These are the new rules. International law is now subordinate to raw power realism. Spheres of influence are back and will be enforced by military force. Sovereignty is no longer absolute. It is conditional on alignment with great power interests. And the US has signaled that leadership decapitation is an available and primary tool of statecraft. ऐसे समय में global power blocks, उनका क्या रिएक्शन है? It is somewhat the binary reaction. जो की प्लेयर्स हैं, वेस्टर्न, यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल, यूके, ये सब सपोर्ट कर रहे हैं कि इट इज़ रिमूवल ऑफ अ डिक्टेटर एंड नार्को टेररिस्ट. लेकिन यूरेशियन, चाइना, रशिया, ईरान इसको कंडम कर रहे हैं. दे आर सेइंग इट इज़ आर्म्ड एग्रेशन, वायलेशन ऑफ द यूएन चार्टर. और जो कंट्रीज न्यूट्रल है, नॉन अलाइंड है, जैसे कि हम या यूनाइटेड नेशंस या कोलंबिया, वो कह रहे हैं कि दिस ऑल वुड लीड टू रीजनल डीस्टेबलाइजेशन. लेट अस सी इंडिया.
India used to be a major buyer of the cheap Venezuelan oil, but these new US tariffs put India and other countries in an impossible position. The choice was keep buying the cheap crude oil and risk being cut off from the US financial system or stop it. And like pretty much everyone else, India had to stop, which meant losing a really important and affordable source of energy. How it is going to affect or make an impact on energy security program of India. India's trade with Venezuela would certainly be affected, right? This intervention will change the complete maths. US is pledging to rebuild the oil infrastructure, and it could eventually return 2 to 3 million barrels per day to the global market. For Indian refiners, a stable US managed Venezuelan oil sector provides a critical alternative to Russian and Middle Eastern crude. Previously, Caracas agreed to accept Indian rupees for oil, right? But now India will have to negotiate these terms with US aligned transition team. So now you certainly can understand how the concept of geopolitics can be applied in a practical scenario. The Venezuela case study is one of the best practical example from today's time. इसको हम और अच्छे से समझते हैं. इंडिया का जो ऑफिशियल रिस्पॉन्स है उसको डिकोड करते हैं. On January 4th, 2026, India expressed deep concern, calling for dialogue. This reflects a delicate geopolitical balancing act. Reason? Firstly, the superpower effect. With the US administration imposing 50% tariffs and 25% penalties on Indian purchases of Russian oil, now India can't afford a direct diplomatic confrontation with Washington. Secondly, from the point of view of strategic autonomy, India's refusal to outright condemn the US the way Russia and China has done, it signals a wait and see approach. India is prioritizing its relationship with the US while subtly defending the principle of state sovereignty. And now you see the approach of people versus regime. By supporting the people of Venezuela rather than the Maduro government, India leaves the door open to working with any US-backed interim administration. And for the other big global powers, this is a major shakeup. चीन और रूस, उन्होंने तो वहाँ अरबों डॉलर का निवेश किया हुआ है. उनके लिए ये एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल हार है. Venezuela was their closest ally, their main geopolitical foothold in America's backyard. And now it was gone. आज चीन वेनेजुएला का सबसे बड़ा लेनदार है. China had poured billions of dollars in loans into Venezuela and now fear losing every last cent. For Russia, it is a huge strategic loss. रूस ने अमेरिका के पड़ोस में अपना सबसे अहम स्ट्रैटेजिक पार्टनर खो दिया है. क्या ये दोनों देश सैन्य रूप से कुछ कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है. मेरे ख्याल से ये भी अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते. वेनेजुएला उनके प्रभाव क्षेत्र से बहुत दूर है और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है. And right there in Latin America, countries are totally divided. Left-wing governments such as Brazil and Colombia condemn the intervention and are calling this a gross violation of the sovereignty of one country. They are afraid that tomorrow America can do the same for them. Right? On the other hand, countries like Argentina are supporting the withdrawal of this socialist dictatorship. मतलब लैटिन अमेरिका इस मुद्दे पर दो हिस्सों में बंट चुका है. अगर साउथ ईस्ट एशिया के रेफरेंस में अब हम इन सारी चीज़ों को देखें तो आपने नोटिस किया होगा कि इन साउथ ईस्ट एशिया the reaction has been much sharper than in India. Nations like Malaysia, Indonesia are alarmed. Their fear is that if the US can do such thing to the head of state under the guise of domestic law, it provides a moral and legal template for other powers like China to take unilateral action in the South China Sea और ताइवान. और जिस स्पीड में US ने ये पूरा ऑपरेशन किया है उसकी स्पीड को देखकर नॉर्थ कोरिया और चाइना को इट इज सर्विंग एज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कैपेबिलिटी.
proving that the US can conduct regime change with surgical precision in 2026. And this event further splits Asia between those who prioritize the UN Charter, that is, sovereignty, and those who prioritize strategic alignment with the United States. So finally, the present status is Maduro and Flores are in New York Detention Center, awaiting their trial. Charges are narco-terrorism, conspiracy to import cocaine. जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने क्लेम किया है कि शी शुड बी डिक्लेयर्ड प्रेसिडेंट, बट द यूएस हैज स्टेटेड इट विल रन द ट्रांजिशन. ये जो पूरी केस स्टडी है वर्ल्ड वाइड जियोपॉलिटिक्स और इंडियन जियोपॉलिटिक्स दोनों के ही नजरिए से देखने की एक कोशिश की है. फॉर इंडिया द कैप्चर ऑफ Maduro is not just a distant event, it is a stress test for strategic autonomy and energy diplomacy. Conclusively, इसके strategic implications क्या है? ये जो 3 जनवरी का एक्शन हुआ है, ये सजेस्ट कर रहा है that international law is being replaced by raw power realism. वहीं जो neighboring states हैं, कोलंबिया, ब्राजील, they face a choice. Align with the US administration or risk being seen as complicit in regional instability. And expect Russia to increase military presence in Cuba, Nicaragua as a reciprocal threat to the US mainland. With this, we come to an end of this lecture. With a question to you all, the US has secured the oil, but can it avoid the traps of nation building? Think over. Until we meet in the next session. Thank you so much. Good day.